Hello, dear students. Please open this two lecture notes, that is biomechanics of complete denture. Uh, and these are two lecture. Mechanical objective. This includes number one, retention, stability, support, design, residual ridge, and the part of alveolar ridge which is left after tooth extraction. तो ये रेजिडुअल रिज क्या है? जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं और जो अल्वियोलर रिज एरिया, रिज का जो लेफ्ट होता है बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन, दैट विल बी कॉल्ड अल्वियोलर रिज. तो ये अल्वियोलर रिज ना, इसमें हर टाइम के बाद रिजॉर्प्शन हो जाते हैं, बिकम रिड्यूस्ड इन साइज़. तो ये रिडक्शन जो हैं, ये रिजॉर्प्शन जो हैं, ये जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत रैपिड होता है, देन इट बिकम स्लो डाउन्स एंड इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. बट फर्स्ट ईयर ऑफ रिजॉर्प्शन, मैक्सिला में ये रिजॉर्प्शन 2 to 3 मिलीमीटर होता है. फॉर एग्जांपल, इन मैक्सिला रिजॉर्प्शन इज वर्टिकल इन अपवर्ड एंड इनवर्ड. लिंगुअली नो, पैलेटली, क्योंकि मैक्सिला में जब आप एंड साइड करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैलेटली. तो पैलेटली, तो एज रिजल्ट ऑफ दिस द मैक्सिलरी आर्च बिकम नैरो एंड स्मॉलर. और मैंडिबल में द रिजॉर्प्शन इज डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड एंड प्रोग्रेसिवली. As a result of this, the mandible become wider during the first year of extraction. The residual ridge resorption in maxilla is 2 to 3 millimeter, and mandible it is 4 to 5 millimeter per year. Now, what are the factors which affect the ridge resorption? These are anatomical, metabolic, and mechanical. Anatomical factor means जितना ज़्यादा एनाटॉमी हो, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतना ज़्यादा रिजॉर्प्शन होगा. मेटाबॉलिक फैक्टर जो है ना, दे टू टाइप्स होता है, लोकल फैक्टर, सिस्टेमिक. लोकल फैक्टर्स such as endotoxin, osteoclast activating factors, prostaglandin, heparin, and trauma, while systemic factors such as estrogen, thyroxine, growth hormone, vitamin D, calcium, and protein. If the systemic factor are in normal limit, then it will compensate the local factor. लोकल फैक्टर जो है ना वो रिज रिजॉर्प्शन करते हैं, वाइल सिस्टमिक फैक्टर जो है ना उसको प्रिवेंट करते हैं. अच्छा, अब ये आ गई कि व्हाट इज़ दी मैकेनिकल फैक्टर. मतलब एक ग्रेटर फोर्स होगा रिज पे, तो जैसे कि पैराफंक्शनल हैबिट में देयर विल बी ग्रेटर मोर रिजॉर्प्शन. ग्रेटर द फोर्स ऑन alveolar ridge in parafunction, as in parafunctional habit, then there will be greater ridge resorption. Now, retention. Retention, it is the quality of the denture to its removal from the mouth in a direction opposite to that of insertion, or it is the quality which resists the displacement of the denture. मतलब जब डेंचर निकल आता है तो व्हाट आर डिसलॉजमेंट फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस है जो डेंचर को बाहर मुंह से बाहर निकालता है या डिसलॉज करते हैं. तो दैट इज च्यूइंग फूड, adhesive nature of certain food like chewing gum and other sticky food, forces of gravity है surrounding musculature है, lips, cheeks, tongue, parafunctional habits है like bruxism है, और imbalance occlusion मतलब है improper occlusion. Now, what are the retention and complete dention? It is एक ये टू टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रिटेंशन, सेकेंडरी रिटेंशन. द प्राइमरी रिटेंशन इज नंबर वन फिजिकल मीन्स and number two mechanical means. Physical forces involved in retention are adhesion, that is between the denture and the saliva, and the saliva in the mucosa. मतलब है कि जिस तरह ये आप एलपी पे दो चीज़ें लगाते हैं, तो इसी तरह एलपी सलाइवा इज एलपी जस्ट लाइक. और सेकंड, कोहेजन इन कंप्लीट डेंचर सलाइवा इज कोहेजिव इन नेचर. Interfacial surface tension, this prevents the denture separation at the border. Atmospheric pressure which is
developed between the denture base and the mucosa is opposed by atmospheric. ये भी clear है. Capillary attraction, that is space between the denture and basal tissues, act like capillary tube with saliva as a liquid. ये भी ठीक है. Gravity may be beneficial a lower denture as it pull the denture in the downward direction towards the basal seat on the one side. On the other hand, it may be harmful uh, as the forces of gravity acts against the upper denture. मतलब है कि that is the gravity lower denture में beneficial है, upper में harmful है. What are the factors which affect physical forces? Number one, these are saliva. Saliva, the quality, quantity, series in the series and mucus saliva affects the फिजिकल फोर्सेस है. तो अगर सलाइवा प्रॉपर है, प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी में है, तो देन देर विल बी ग्रेटर रिटेंशन. सरफेस एरिया लार्जर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रिटेंशन. ज़्यादा एरिया जैसे अपर डेंचर में ज़्यादा रिटेंशन होता है, लोअर में कम होता है. इंटीमेसी ऑफ कॉन्टेक्ट, क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द डेंचर टू टिश्यू, मोर विल बी रिटेंशन. पेरिफेरल, ये जो है ना फाइनल इम्प्रेशन हम प्रोड्यूस करते हैं. पेरिफेरल फाइनल इम्प्रेशन डेंचर जो बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं, तो उससे अगर पेरिफेरल अच्छा हो, गुड विल बी रिटेंशन. मैकेनिकल एड इन रिटेंशन, दीज आर अंडरकट्स एंड इम्प्लांट्स, म्यूकोजल इंसर्ट्स, रबर डैम, रबर सक्शन डिस्क ओवर डेंचर अटैचमेंट, suction chambers, magnets. Secondary retention, these includes surrounding musculature like cheeks, lips, tongue, soft palate, floor of the mouth, masseter muscle. In neutral zone, neutral zone बहुत important है. ये जो है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लिप्स और चीक्स डेंचर को इनवर्ड पुश करता है, टंग बाहर पुश करता है. बट देयर इज अ स्पेस बिटवीन the tongue and the lips and cheeks where these two forces are equal. This area is where the forces are equal is called neutral zone. और it is, इसके लिए हम न्यूट्रल जोन इम्प्रेशन लेते हैं और यहाँ पे टीथ सेटअप करते हैं, तो फिर जो है ना रिटेंशन गुड होता है. तो न्यूट्रल जोन, दिस इज द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द lips and cheeks on one side, that is from outside, and the tongue on the other side, that is from the inside, where the forces between the lips and cheek and the forces of the tongue are equal. Now इसके बाद second, denture border should be neither overextended nor underextended. Occlusive schemes means good occlusion, balanced occlusion, coronoid process, psychological factor, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल मतलब है एपिलेप्सी और पार्किंसनिज्म में न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल पुअर होता है, तो रिटेंशन पुअर. प्रॉपर पेशेंट इंस्ट्रक्शन, आपने पेशेंट को सही इंस्ट्रक्शन देना है कि आप प्रॉपर रिकॉल विजिट्स कर लेंगे, फिर जो है ना वो मतलब है कि जो प्रॉब्लम वो रिमूव होगा, तो फिर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ज़रूरी है. स्टेबिलिटी, अब सेकंड जो है ना स्टेबिलिटी है. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसेस टू बी firm, stable, steady or constant, are the quality of the complete denture to resist displacement by functional, horizontal, rotational and lateral forces. मतलब है स्टेबल होगा, हिलता नहीं है वो डेंचर, हिलता नहीं है, एक जगह पे खड़ा है. लेटरल फोर्स. अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट स्टेबिलिटी? दीज आर इंटीमेट और क्लोज कॉन्टेक्ट. नंबर 2, रेजिडुअल रिच साइज एंड क्वालिटी. गुड साइज होगा, गुड क्वालिटी, देयर विल बी गुड स्टेबिलिटी. स्टीप पैलेट विल एनहेंस स्टेबिलिटी वाइल डीप पैलेटल वॉल्ट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी. अगर डीप हो तो उसमें पेरिफेरल रिटेंशन सही नहीं आता, इसलिए डीप पैलेटल वॉल्ट में स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी. न्यूट्रल जोन सराउंडिंग मस्कुलेचर, occlusal factors, that is balanced occlusal, increases stability. Flange shape and contour, that is the outside flange and shape and contour should be highly polished, there will be good stability.
एबनॉर्मल रिलेशनशिप, दैट इज़ प्रोग्नेटिज्म रिट्रोग्नेटिज्म। मतलब है कि प्रोग्नेटिज्म रिट्रोग्नेटिज्म में नॉर्मल रिज रिलेशनशिप नहीं होता, तो देर इज़ बैड stability and not good stability. Now, direct bone and courage, like implant supported complete denture, are good stability. मतलब है कि इम्प्लांट से जो इम्प्लांट लगा कि जो डेंचर उसके ऊपर हम कंप्लीट डेंचर बनाते हैं, दैट इज बोन की अंदर आप जो है ना इम्प्लांट लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बोन डायरेक्ट बोन एंड कोरेज, तो ये गुड स्टेबिलिटी होगा। नाउ वी कम टू द सपोर्ट ऑफ द कंप्लीट डेंचर। ये तो जो आरपीडी में है सपोर्ट वही चीज़ है। इट रेजिस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ complete denture toward the basal seat area, that is ridge and floor. Without proper stability support, the denture cannot maintain stability, retention and stability, and therefore will not function properly. ये अंडरस्टैंड करें, अगर सपोर्ट इज पुअर, द रिटेंशन स्टेबिलिटी विल बी पुअर। तो ये स्टेबिलिटी, रिटेंशन एंड सपोर्ट आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। हाँ, our support is the quality to resist vertical movement। मतलब ये vertical क्या है? Downward movement toward the tissue। Now, what are the factors which support the which affect the support? These are surface area. Greater the surface area, greater will be support। मतलब है कि maximum extension within a normal limit। Number two, nature of supporting mucosa। The mucosa should be thick, resilient, will have good सपोर्ट। मतलब ये द म्यूकोजा फ्ले भी नहीं होना चाहिए, न वो टेन होना चाहिए, थिक रिजिलियंट होना चाहिए, देन सपोर्ट विल बी गुड। इम्प्रेशन प्रोसीजर गुड, एंड द टाइप ऑफ इम्प्रेशन गुड इम्प्रेशन एंड गुड सपोर्ट। मतलब ये जो प्रोसीजर इम्प्रेशन आपका गलत होगा तो सारा डेंचर गलत होगा, तो फिर इम्प्रेशन प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। गुड इम्प्रेशन होगा, प्रॉपर इम्प्रेशन होगा, एक्यूरेट इम्प्रेशन, so then there will be good support। Accuracy of fit, accurate fit of the denture will have good support, then loose fit। मतलब है कि अगर डेंचर प्रॉपरली फिट हो तो देन गुड सपोर्ट होगा, और अगर लूज फिट हो तो देन सपोर्ट विल बी बैड। इसी तरह डायरेक्ट बोर्ड एनकोरेज, इम्प्लांट सपोर्टेड कंप्लीट डेंचर हैव गुड एंड आइडियल सपोर्ट। मतलब है सबसे ज़्यादा कंप्लीट डेंचर में bone encourage like implant, using implant, then there will be ideal support। okay dear, thank you। आप लोग जो नोट्स निकाल ले और मैंने जो पढ़ा है वही अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह छुट्टियाँ ख़त्म हो तो फिर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।